In a diverse and multicultural country like India, Sufism has been cultivating tolerance and harmony among communities for ages. The Dargah of Baba Shah Mina Shah serves as a similar example of the teachings that have inspired people of all faiths to propagate love and harmony. Let's have a look. In the heart of the culturally vibrant capital Lucknow of northern Indian state of Uttar Pradesh lies the mystical Dargah of Hazrat Makhdoom Shah Mina Shah Rahmatullah. The mazar of Baba Shah Mina Shah is admired equally by all the devout people, Hindu, Muslim, Sikh and Christians, and is visited by them on a regular basis, making it a remarkable symbol of communal harmony. The sacred shrine, believed to be 500 years old, was established during the reign of the Sharki dynasty. मैं पिछले 7-8 सालों से आ रहा हूँ और यहाँ से रूहानियत तो आपको बहुत मिलेगी। इत्मीनान और सुकून जिनके लिए नहीं है वो यहाँ आके अपना वक्त आधा एक घंटा दें, बैठें आराम से, उनको बहुत सुकून मिलेगा इंशाल्लाह। यहाँ पर एकता का बहुत बड़ा वो मिलता है आपको, क्योंकि यहाँ पर एक धर्म से कोई नहीं आता, यहाँ पर सभी आते हैं। और अगर आप यहाँ देखेंगे तो मोस्टली आपको हिंदू भी भाई मिलेंगे, हमारे मुस्लिम भाई भी मिलेंगे। और मैं पिछले 8 साल 10 साल से जो आ रहा हूँ, मैं रेगुलर आता हूँ, रेगुलर देखता हूँ और डेली जो है लोग आते हैं और हर जो है थर्सडे भी लोग आते हैं। The ancient shrine of Baba Shah Mina Shah, a symbol of religious and cultural harmony, not only fosters the bond between the people associated with different faiths, but also propagates a profound message of an inseparable bond that unites them. Tens of hundreds of devotees from different parts of the country visit the Dargah to pay their respects. It is believed that nobody leaves empty-handed as the holy shrine bestows its blessings upon all. कई मुरादें पूरी हुई, सबसे ज़्यादा मानसिक शांति मिलती है यहाँ के। कोविड में भी आता रहा, लोगों ने मना किया कोविड नहीं मत आइए, तब भी मैं आता रहा। तो बेसिकली हर जगह हर बार मांगने नहीं आता हूँ, ईश्वर का शुक्र अदा करने भी आता हूँ। कितनी बार आता ज़रूर हूँ, जैसे माँ बाप के पास आप जाते हैं, हर बार मांगने नहीं जाते हैं। मुरादें भी पूरी हुई हैं, कोविड में स्वस्थ हूँ, सब लोग हैं, इससे बड़ी मुराद क्या पूरी होगी। Apart from being a place to pursue spiritualism, various other events like langars and qawwalis are organized occasionally, which are vigorously participated in by the devotees coming there. The musical events uplift everybody's spirit and breathe a sense of joy into weary souls. They also resonate with the hearts of the onlookers. लगभग दरगाह को 550 साल से ज़्यादा का वक्त हो गया है और ये दरगाह मुग़लों से भी पुरानी दरगाह है। जब शर्की डायनेस्टी हुआ करती थी, जो अवध को रूल करती थी, तब की दरगाह है, तब के बुज़ुर्ग हज़रत मखदूम शाह मिना शाह रहमतुल्लाह अलैह। सूफ़ियाए किराम की जो मोहब्बत और जो पैगाम है, वो उससे तो सभी लोग मुतासिर होते हैं, चाहे हिंदू हों, मुसलमान हों, ईसाई हों, सिख हो, क्योंकि यहाँ पे एक बहुत बड़ा मेडिकल कॉलेज है, किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी है। तो जो लोग परेशान होते हैं, जो लोग अपने अक़ीदतमंद या जो एडमिट होते हैं उनको लेकर आते हैं, तो उन लोग के लिए लंगर का एहतमाम किया जाता है। वो लोग दुआएं मांगते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं और बहुत ज़्यादा तादाद में मखदूम शाह मिना साहब रहमतुल्लाह अलैह से दुआ के लिए आते हैं। Sufism, through its mystical teachings, have enlightened and encouraged the world to propagate love and harmony among all communities, the enduring essence every society always needed and needs for its well-being.